India is the world's largest democracy, but being a democracy does not insulate it from political violence of a serious kind. We are fortunate that inter or intra-party rivalry has not descended into civil wars with each faction or outfit having its own private militia. But for an advanced democracy like ours, the culture of political violence that has been endemic in states like Bihar, Kerala and West Bengal among others is a big source of concern. West Bengal unfortunately has a long history of political violence, and each time the state witnesses violence of the kind in Rampurhat and Birbhum in March, this history is invoked. The Communist Party of India Marxists governed West Bengal between 1977 and 2011, and the TMC took over from there on, but political violence is still sadly a regular feature in the state. It was in 1967 in Naxalbari in West Bengal that the Naxalite movement began, and it was countered strongly by a Congress government led by Siddhartha Shankar Ray. The CPIM began making strong inroads in the state, and the turf battle between the Congress and the left was violent. Muscle power was a strong instrument used by political players in West Bengal, and that has continued even after the TMC came to power in 2011. Between 2015 and 2019, according to the URF, which relies on data published in the NCRB, West Bengal leads the list of murders attributed to political motives. Birbhum was the most recent site of such violence, and that too on a large scale. On March 21st, in Bagtui village in Rampurhat in Birbhum district, Bhadu Sheik, a deputy Panchayat leader associated with the TMC, was murdered. He allegedly rose up the ranks from driving police cars to collecting a welfare tax, which is a euphemism for extortion from sand miners. People riding a motorcycle allegedly threw crude bombs towards Bhadu Sheik, a short distance away from the tea stall he used to visit, leading to his death. In what is alleged to be an act of retaliation, several houses were set on fire and 8 people, including 3 women and 2 children, were charred to death. The post-mortem revealed that victims were beaten up before their houses were set on fire. We are here at Rampurhat's Bagtui village, a village that got erupted in massive violence, or rather got engulfed in violence. Houses after houses have borne the brunt of this mindless violence that has now left several people in this village homeless. The same violence which had left 7 people of the same family charred to death. Look at this house. This belonged to somebody which has been completely vandalized, ransacked and then set ablaze. As I walk inside, I can literally feel the difference in temperature. Temperature from outside and the temperature inside, because the heat can be still felt. This used to be the kitchen of somebody which was completely ransacked, and the utensils have all fallen haywire, and it seems like there had been an effort to defend, and there was a scuffle which has led to such things falling helter and skelter, and there was a struggle, seems like pretty much evident. If I can look into this particular room, I still see fire smoldering right underneath that bed, which is now completely gutted. The roof above has fallen down. That had given up to the fire. The entire wall has become black. I'm not even sure whether it's safe to be inside or not. So it's complete debris. A house of somebody has been reduced to ashes, and everything happened after the death of Trinamool Congress Panchayat leader Bhadu Sheik. Now, Bhadu Sheik is known to be pretty important, influential person, significant an individual in this neighborhood, and his death, his brutal murder, had sparked off a massive tension. Soon after that, there had been absolute mayhem. Who are these people behind this mayhem? Still unknown. 10 people have been arrested, but who are these people? Do they have any political color? It's still unknown. Look at this particular house. The cycle has been gutted. The entire roof has fallen down. Everything reduced to a debris. I still see smoke billowing out from that side, because this entire courtyard seems like was up in flames. Is this an outcome of internal factionalism within the TMC is a question many are asking, but whatever the political affiliations of those who died, serious concerns have been raised about the state of law and order in West Bengal.
कानून व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, लॉ ऑर्डर मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हो चुकी है। हमसे जाने से पहले वहाँ के डीजीपी नहीं गए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ पर जो है विजिट पर नहीं गई, इतना सीरियस केस हुआ है। उनको जब मालूम चला कि हमारी जो है टीम वहाँ पर जा रही है कलकत्ता, हम जब लोग पहुँच गए, उसके बाद नेक्स्ट डे मुख्यमंत्री जी जाते हैं। हम लोग कैसे ऐसा हो सकता है? पहली बार मैंने देखा कि क्या ऐसी इस देश के अंदर हो सकता है कि सड़क के ऊपर जो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो है, लोकतंत्र की हत्या हो सकती है। ये हादसा नहीं है, हादसा होता है अचानक, अचंभित, जैसे रोड एक्सीडेंट होता है। ये प्री मेडिटेटेड प्लान्ड सीरीज ऑफ मर्डर्स, ठीक है। और अभी है ये नस्ल कोसी, जेनोसाइड बोलते हो, बांग्ला गणहत्या बोली, इट्स अ जेनोसाइड। सो मेनी पीपल डाइड। लेकिन अब तक आपने देखा पुलिस इतना पुलिस है कि गांव वाला सब भाग गया। ये पक्ष वो पक्ष, मैं किसी का पक्ष नहीं बोल रहा हूँ, खुद सरकार ने कहा है कि रिटेलिएशन हुआ है। तो जब एक मर्डर हुआ तो उसके बाद पुलिस को प्रिकॉशन लेना चाहिए था, जबकि मालूम है कि वेल नोन गैंगस्टर है, लेकिन वो उप प्रधान था पंचायत का, इसी गांव में खड़ा कर मैं बोल रहा हूँ, और वो पुलिस को पालता था। कहने का नहीं है, जो हुआ है इतना बुरा काम हुआ है। जमहूरियत को वो कुचल के लिए, और जमहूरियत का सिस्टम जो है उसको कुचल के लिए जो बंदोबस्त किया है तृणमूल सरकार ने, ये बहुत गंदा कारबार है। सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रूथ, इसलिए एसआईटी किया है। जो सिचुएशन है बंगाल में, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये बुरा है, हम तो दफे दफे कहते बुरा बन गया। हम लोग चाहते हैं वो कोई जांच को लेकर कोई कमेटियां बना के ये जांच करना चाहिए, नहीं तो इंसाफ नहीं मिलेगा। The West Bengal government constituted an SIT to look into the matter, but petitions had been filed by then in the Kolkata High Court demanding a CBI investigation. The court ruled against the West Bengal government and transferred the case to the CBI. रामपुर हाट की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। सीबीआई की टीम यहाँ उन घरों पर पहुँच गई है जिन्हें आग के हवाले किया गया, जिनमें 8 लोगों की मौत हुई। तस्वीरें देख लीजिए आप रामपुर हाट की। और सीबीआई की टीम पहले थाने पहुंची, वहां पर एसआईटी ने जो अभी तक जांच की थी उसका हैंडओवर लिया, और उसके बाद में अब सीबीआई टीम यहां पहुंची है उस जगह पर जिन घरों को जलाया गया। ये आप घर देख लीजिए, इन्हीं घरों को आग के हवाले 21 तारीख की रात को किया गया। अब सीबीआई इस मामले को देख रही है। सीबीआई की टीम एक एक जगह पर जा रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जिन घरों में तोड़फोड़ की गई, जिन घरों को आग के हवाले कराया गया, और ये सामने वाली तस्वीरें देख लीजिए जो घर यहाँ के जले हुए हैं। तो यहाँ अब सीबीआई की टीम लोकेशन पर पहुंची है। जो सीबीआई की टीम की कोशिश है वो ये कि वो 3 अलग अलग टीमों के जरिए इस पूरी जांच को करे। पहली जहां पर आग लगी वहां पर जाना, दूसरा एसआईटी ने जो अभी तक जांच की वहां पर, और तीसरा उन लोगों से पूछताछ करना जो पीड़ित हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो अलग अलग टीमें इसी तरीके से जगह जगह पर ये जांच कर रही हैं। सीबीआई का टीम का साथ हम लोग का कोई रिलेशन नहीं, वो कोर्ट का डायरेक्शन के ऊपर कर रहा है, उसका काम उसको खोदने दीजिए। हम लोग का जो मांग है, गृह मंत्री को अपनी पद छोड़ना पड़ेगी। हाँ, पुलिस मिनिस्टर को अपनी पद से त्यागपत्र जल्दी देना पड़ेगी, और जो गुंडागर्दी चल रहा है खत्म होना चाहिए। The High Court's observations were scathing. It said the incident in Birbhum had shocked the conscience of society, and that even though the SIT was constituted by the West Bengal government on the 22nd of March, no significant investigation had been conducted by it. Moreover, the High Court noted that questions had also been raised by petitioners about the antecedents of one of the SIT members, Mr. Gyanwan Singh, whose name, as per the petitioners, appeared in a murder case dating back to 2007, and a summons had been issued to him by the Enforcement Directorate in relation to a coal smuggling matter. The High Court added that expeditious steps needed to be taken to transfer the case to an independent agency because of an allegation that there was an attempt to wipe off the evidence. इसी लिए आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कभी कभी कि ये लोग झूठा बात कहते हैं। सुबह में मीडिया को बुलाता है दिल्ली में, बुला के बोलता है ममता बनर्जी का खिलाफ में ऐसा बोलना तैयार करके देता है। एक पाड़ा में 2 क्लब में भी झगड़ा हुआ
तो चला गया कोर्ट में सीबीआई कर दो, और कोई सीरियस इंसिडेंट तो करने दो, कोई बात नहीं है, हम कोऑपरेशन करेगा। लेकिन बात क्या है, खाली तंग करो, जैसे लोगों ने भूल जाए कि डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ गया। लोगों को दिमाग उल्टा देने से, लोगों का दिमाग और कोई जगह में ले जाने से खुद अपने आग लगाता है और खुद चिल्लाते हैं। धनवान खजाना भरते हैं, कानून हिफाजत करते हैं, मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। यही तो है, क्या दिया? Government should take immediate and stern measure in order to apprehend those culprits, those heinous culprits. They must be punished, they must be arrested, and I think the ruling parties apparatchiks in cahoots with police have perpetrated this kind of gruesome incident. देखिए, बड़ा स्पष्ट है, बंगाल में ममता बनर्जी पुलिस राज चला रही हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने वर्दी में, सादी वर्दी में पुलिस वाले असेंबली में भेजे, और जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा के विधायकों के साथ बदतमीजी करी, वो किसी भी संवैधानिक सिस्टम में ठीक नहीं है। और हम अपेक्षा करेंगे कि वहाँ के गवर्नर साहब इसकी चिंता करें कि पुलिस का दुरुपयोग असेंबली में नहीं कर सकते, और वो 5 छोड़ सारे विधायक सस्पेंड करें। परंतु जो सच की आवाज़ है, जो वीर भूमि में जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई, उसकी आवाज़ हमारे विधायक वहाँ पर उठाते रहेंगे। Too many questions still begging answers. Too many questions are screaming right into the ears of Birbhum police. As what happened on Monday night, did they allow that to happen? Could they have averted it? Could they have done enough to stop the mayhem? As sources reveal and revelations emerge that on Monday evening, as Bhadu Sheik, Trinamool Congress Panchayat leader, was bombed to death, there was panic. The local police, the SDPO, had intervened, formed teams, started raids. But then soon after that, retaliatory action had started here at Bagtui village, which is roughly about 1 kilometer away from the very spot where Bhadu Sheik was bombed to death. What is now coming to light, that additional SP of Birbhum had arrived to that very spot at around 10:20 at night. Imagine, Bhadu Sheik was bombed to death at 8:30. Additional SP came down there at around 10:20, but he could not cover 1 kilometer distance, did not come to Bagtui village from the very spot where Bhadu Sheik was bombed to death. Question is why? The SP of Birbhum, if sources are to be believed, had arrived at Rampurhat that very night at around 12:30. He too had gone to place of occurrence 1, the spot where Bhadu Sheik was bombed to death, and he too did not visit Bagtui village even then, even when Bagtui village had erupted in violence, got engulfed in fire. This is the very house right behind me which had gone up in flames. Not one, many other houses had gone up in flames. This is the very house from where 7 charred bodies were recovered. But they were recovered on Tuesday morning. Why? Because police came on Tuesday morning to recover those bodies from this very house. Mamata Banerjee visited Birbhum, spoke of justice and announced compensation for those who lost their lives. But her government has been at the receiving end of massive criticism since law and order in the state is in its jurisdiction. The BJP, the principal opposition party in the state, has been the most vocal. राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण अगर किसी को हिंसा से डरा धमका कर कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन है। इसलिए ये भी हमारा कर्तव्य है कि हिंसा, अराजकता की मानसिकता
अगर समाज में कहीं भी है तो उसका विरोध किया जाए। हिंसा के लिए जगह नहीं है इस देश में। सवाल यहाँ है कि लोगों को बुला बुला के पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं आता पश्चिम बंगाल सेकंड में इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई है, और कोर्ट इंटरवीन नहीं करते तो हम तो मर जाते हैं। कितने मारे गए हैं उसका हिसाब ह्यूमन राइट्स कमीशन दे रहा है, कोर्ट के पास जमा हो रहा है कागज। मैं तो मांग करती हूँ कि ये रूल भी गलत है कि कोर्ट में जो जमा हो गया उसको बाहर नहीं आना चाहिए। मैं तो बताती हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन के जितने सारे कागजात हैं, जो प्रूफ है, वो राज्यसभा में, लोकसभा में जमा होनी चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल के वीरों की भूमि को जिस तरह से लहूलुहान किया जा रहा है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल जो वीरों की भूमि कही जाती थी, उसको अराजक तत्वों ने, गुंडों ने, क्रिमिनल्स ने, एंटी नेशनल फोर्सेस ने टीएमसी और उसकी सरकार के संरक्षण में हाईजैक करने की कोशिश की है। वो देश पूरा, जब पश्चिम बंगाल तो दुखी है ही, पूरा देश भी उससे दुखी है। आप वीरों की भूमि को लज्जित करने का काम कर रहे हैं, आप वीरों की भूमि को लहूलुहान करने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये सब गुनाह में पूरे देश के विपक्षी हमारे साथ खड़े हो जाएं। तो ये तो पश्चिम बंगाल के लोग भी इस तरह की हरकत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और देश भी नहीं। जब जा रहे थे बीरभूम पहुंचने से पहले, मतलब जो स्पॉट है, एपिसेंटर है, वहाँ से पहुंचने के लगभग 30-35 किलोमीटर पहले साइकिया बोल के एक जगह आता है, टाउन आता है छोटा सा। वहाँ पे हमें रोका गया, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की गई, और उसके बाद हम जब वहाँ पे पहुँचे, हमारी टीम ने तहकीकात की, और तहकीकात करके जो रिपोर्ट है आज हमने जमा किया। उस रिपोर्ट में आप देख सकेंगे कि किस तरीके से बीरभूम में उन सब इलाकों में कोई आईपीसी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लागू नहीं होता। वहाँ पे टीएमसी के लीडर्स ही लास्ट वर्ड है। The protests against the ruling dispensation in West Bengal spilled over onto the floor of the Legislative Assembly. The TMC and the BJP MLAs came to blows. আজকে কিছু কলকাতা পুলিশের লোককে সিভিল ড্রেসে ভিতরে আনা হয়েছে, প্রি প্ল্যান। আজকে প্রমাণ হয়ে গেল যে বিধানসভার ভিতরেও বিরোধীদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ এবং বিধায়করা কেউ নিরাপদ নয়। এই বিধায়কদের নয় তাদের সদস্যপদ ত্যাগ করতে হবে, নয় তোলামূল পার্টিতে নাম লিখাতে হবে, নইলে হাউসে এসে তার স্বাভাবিক কাজ করার অধিকারটুকুও পাবে না। এর থেকে নিন্দা আর কিছু হতে পারে না। আমাদের যারা আহত হয়েছে তাদেরকে মেডিকেল করব এবং প্রয়োজনে অধ্যক্ষের সুবিচার না পেলে আমরা আদালতেরও আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করব আইন মেনে। हमारा शर्ट फाड़ दिया, हमको घुसी मारा, टीएमसी का विधायक था, कई विधायक मिल करके हमको धक्का मारा, घुसी मारा, हमें शर्ट छीन दिया। हमारे लिए हिंदुस्तान का कोई भी बेगुनाह नागरिक अगर उसका कत्ल होता है, अगर किसी भी इंसान का कत्ल होता है, तो हम इंसान का कत्ल नहीं मानते बल्कि इंसानियत की हत्या मानते हैं। और ना हम इंसानों की हत्या के पक्ष में हैं, ना इंसानियत के। ममता जी दोनों के पक्ष में दिखाई पड़ती हैं। There has been a demand by the opposition parties in the state for the invocation of Article 355 and 356 and precedence rule. सर, ये सांसद में हम लोग आते हैं, कोई एक सांसद रहता है, कोई 300 सांसद रहते हैं। सिर्फ कभी नहीं देखा, मेरा 7 साल में कभी नहीं देखा कोई सांसद का ऊपर आक्रमण हुआ। लेकिन सर पश्चिम बंगाल पे आज हमारा शुभेंदु अधिकारी मनोज टिक का ऊपर आक्रमण हुआ है विधानसभा का अंदर, जो पूरा भारत में नजीर नहीं है। सर हम लोग 355 चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा कोई शासन तंत्र नहीं है, कोई सरकार नहीं है। सर विधानसभा का अध्यक्ष ने बोला है उसको मारो। ये भारत का निर्लज का राज्य हो गया। सर इसका ऊपर हम लोग 355 चाहिए। इसका राष्ट्रपति के ऊपर मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के ऊपर मांग करता हूँ। सर पश्चिम बंगाल में कोई गणतंत्र नहीं है, सब लोग झगड़ने के लिए कहता है। सर इसके ऊपर राष्ट्रपति मांग करता हूँ। Congress demanding president rule, how do you see that? See, I demand president's rule, and I also demand Article 21. Okay. Article 21 is right to life. I have a right to live in that state. I demand Article 21 and I demand president's rule, personal demand of Rupa Ganguly. What will worry Mamata Banerjee is that it's twice in less than a year that there has been a major spurt in political violence. The memories of the post-poll violence in May 2021 shot
shortly after the TMC won the state elections for the third time in a row are still fresh. Even back then, the Kolkata High Court had slammed the West Bengal police's handling of the matter and made some scathing observations and transferred the cases to the CBI. Even as the CBI continues to investigate the Birbhum Massacre, the political fallout continues. With just 2 years to go for the 2024 Lok Sabha elections, Mamata Banerjee shot off a letter to all non-BJP chief ministers talking about the threat to federalism and what she claimed was the misuse of central agencies like the CBI and the Enforcement Directorate. Mamata Banerjee and the West Bengal government are under pressure. Muscle power, violence, intimidation, political murders have tragically been a recurring theme in every election in the state, and however big the mandate she has received, her administration has serious questions to answer.